अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इकबाल एंड रूमी सर्कल। मिले हैं हमको आबास है जो मोती इल्म व हिकमत के, हमारा फ़र्ज़ है पहुँचाएँ उनको अगली नस्लों तक। For this particular session I have picked just 2 verses from Jibreil of Iqbal, and I'll try to give an Urdu and English translation of these 2 verses and try to convey the message that Iqbal wants us to have from these 2 verses. Very pertinent verses, of course. Most of the selections that we make for these sessions are so that we can at least address some point that is pertinent to our today's day and age. So this particular selection that I have, Iqbal says, the title is Azadi Afkar, freedom of thought or freedom of expression. So Iqbal says, हर सीना नशेमन नहीं जबरील अमी का, हर फिक्र नहीं तायर फिरदौस का सयाद, और गो फिक्र खुदादाद से रोशन है ज़माना, आज़ादी अफकार है इबलीस की ईजाद। तो उर्दू में अगर ट्रांसलेशन करूं तो ये होगा, हर सीना नशेमन नहीं जबरील अमी का, हर दिल जो है उसके अंदर जबरील अमीन जो है, हमारे जो लेके आते हैं पैगाम, खुदाबंदी पैगाम जो आता है इंसान के लिए, वो हर सीने के अंदर नहीं उतर सकता। नशेमन होता है जहाँ पे कोई चीज़ बैठ सके, आ सके, जहाँ सुकूनत अख्तियार कर सके। तो हर सीना नशेमन नहीं जबरील अमीन का, हर दिल के अंदर जबरील अमीन जो है वो उतर के नहीं आ जाते। हर सीना इस काबिल नहीं होता कि वहाँ जबरील जो है वो लेके पैगाम आ जाएं, पैगाम खुदाबंदी। तो दूसरा क्या है, हर फिक्र नहीं तायर फिरदौस का सयाद। फ़िक्र थाट प्रोसेस होता है, ख्याल होता है। हर फिक्र नहीं तायर, फिर तायर परिंदे को कहते हैं, फिरदौस जन्नत को कहते हैं। तायर फिरदौस वो परिंदा एक मिसाली परिंदा है जो फ्लाई करता है और बेश तक पहुंच जाता है, तायर फिरदौस उसको कहते हैं। आपका पैगाम लेके जो फिरदौस तक पहुंच जाए उसको तायर फिरदौस कहते हैं। तो हर फिक्र नहीं तायर फिरदौस का सयाद। सयाद वो होता है जो उस परिंदों को पकड़ ले, उस परिंदे को काबू कर ले और फिर उसको जहाँ चाहे वहाँ भेज दे। तो यानी कि जो भी ख्याल, हर फिक्र नहीं तायर फिरदौस का सयाद, आपके अंदर जो हर ख्याल आता है उसके अंदर ये सलाहियत नहीं, ज़रूरी नहीं कि हो कि वो आपके उस ख्याल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक पहुँचा दे, यानी कि वहाँ फिरदौस तक पहुँचा दे। कि हर फिक्र जो, हर ख्याल जो आपके पास आता है वो इतना पाक साफ नहीं होता कि इस काबिल हो कि वहाँ जा सके। तो कहता है, गो फिक्र खुदादाद है से रोशन है ज़माना। फ़िक्र खुदादाद, गॉड गिवन सोच जो होती है, जो अल्लाह की तरफ से दी हुई आपके अंदर ख्याल आते हैं, उससे ज़माना रोशन रहता है। अल्लाह की तरफ से पैगामात तो आते हैं इंसानों के लिए, उनकी भलाई के लिए कि क्या करना क्या नहीं करना। इस चीज़ से ज़माना दुनिया रोशन तो है, लेकिन कहता है आज़ादी अफकार है इबलीस की ईजाद। कि आप इतने आज़ाद हो जाएं सोचने में कि जो ख्याल आपके जहन में आया उसी के ऊपर आप अमल करना शुरू कर दें। अगर आप इतना ज़्यादा उसके अंदर ख्याल को, अपने आप को आज़ाद कर दें और जो भी ख्याल आपके पास आता है उसको आप समझेंगे इसी के ऊपर मैंने अमल करना है और ये सही है, तो फिर ये जो है कहता है इबलीस की ईजाद है कि ये आपको गलत रास्ते पे ले जाएगा। ये ऐसी चीज़ है जिसको इबलीस ने आपके अंदर डाल दिया है, कि वो इबलीस जो है वो आपके अंदर इस चीज़ को ला रहा है कि चलो ये कर लो, जो भी आपके जहन के अंदर ख्याल आ जाए कि हमें ये भी कह दूँ वो भी कह दूँ। तो इसलिए मोहतात रहना पड़ता है। नाउ इन सिंपल इंग्लिश ही सेज, हर सीना नशेमन नहीं जबरील अमी का। नॉट एवरी हार्ट, नॉट एवरी आई वुड से bosom also, not every heart or chest is the rightful place where angel Gabriel can descend and bring a divine message. Not every heart is really capable or worthy of receiving a divine message by intuition or by some kind of a vehicle that Allah subhanahu wa ta'ala would use to convey his message. And the next verse is, हर फिक्र नहीं तायर फिरदौस का सयाद. Not every thought process that comes to your mind or to your heart really is the one that really can capture the bird of paradise and take that particular thought of yours to the divine.
So not every thought that comes to you, to your mind, is that pure that it really is worthy of being face to face with the reality of the truth or with Allah subhanahu wa ta'ala. Then he says, go fikre khuda daat se roshan hai zamana. Although I do know and I do believe that this world is really aglow or a light or brightened by the thought process that is God given to his selected people and to his people. I know that he says that the divine thoughts that come, the messages that come, and people that have an ability to think clearly, they are the ones that keep the life going in this earth and keep everything light and bright. Azadi افکار ہے ابلیس کی ذات, but the freedom of expression to the point that it really goes beyond certain boundaries, that particular freedom, total freedom of that kind, is really invention of the Satan. It's a satanic invention when you feel that this thought came to me and I should act on it. In other words, there are certain limitations as to what you can do. You cannot marry your mother, you cannot marry your sister. Just because the thought came to you doesn't mean that you can do it. Similarly, you cannot do a whole lot of things, and you cannot. Recently there is a whole lot of movement about being so free, my body, my will, that kind of a thing. There is certain things you can do, yes, to a certain extent you are free to do, but you can't just walk around naked all over the place in front of your grandparents and children and all that and say, yeah, I'm free to do whatever I want to do. It's my body and it's my will. That does not work. So basically, this is the message that Iqbal is giving to us, that not every thought that comes to you, you should act upon it. Be very careful as to what is right and what is wrong, and only do what is permissible in a society. Until we meet again, Allah Hafiz, Assalamu alaikum.